Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today I'm going to share with you a makeup tutorial video. So without any further delay, let's get started. So basically I'm getting ready for Karma Puja, and for that I'll be wearing this sari. So I'll be draping the sari later after doing my makeup. So let's get started with my makeup. So I'm just doing my skincare first and I'm applying toner for that. और अभी मैं टोनर को फेस पे स्प्रे करके टैप टैप मोशन में अपने फेस पे एब्जॉर्ब कर लूँगी एंड देन आई अप्लाई माय मॉइस्चराइज़र. So let's start with the makeup, and firstly I'll apply primer, and for the primer I'll be using Swiss Beauty Real Makeup Base Highlighting Primer, and I'll apply evenly on my face, mostly on my T-zone and highlighted areas. Now I'll be applying NYB Pro Strobe cream for that extra glow, and I'll be applying this only on my cheeks, nose and little bit on my chins. And now I'll be color correcting my dark circles. For that I'm using orange shade for correcting my dark circles, and I'll blend that with my fingers. And now I'll be applying a darker concealer shade to neutralize the orange effect on my eyes, and I'll blend it as well. Abhi I'll use my blender as well to blend it properly and evenly. I'll be applying foundation on my face, and every product that I've used will be linking down on the description box. मैं डॉट डॉट करते हुए फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, एंड ऑल्सो आई अप्लाई इट ऑन माई नेक. और अभी मैं टैप टैप करते हुए फाउंडेशन को पूरे फेस पे इवेंटली स्प्रेड कर दूँगी, एंड नाउ आई ब्लेंड माई फाउंडेशन विथ अ ब्रश. Later on I'll be blending with my beauty blender as well, ताकि brushes के strokes face पे ना रहे. Now I'll moisturize my lips as well. I'll be using a lighter shade concealer to highlight my under eyes, and I'll apply the concealer little bit on my nose, forehead, cupid bone and cheek, and little bit on my chin as well, and I'll blend it out everything. I'll be applying blush and blend it evenly. अभी मैं अपने अंडर आइज़ को सेट कर लूँगी. सो आई एम नॉट
setting my whole face, just under eyes and corner of my mouth and my T-zone only. So I'll take the product on my beauty blender and just apply it on the required area. Now I'll be doing my eye makeup, and for that I'll be using this shade to define my crease. And now I'll be taking this shade and place it on my outer corner. So now I'll be placing the same shade in my lower lash line also. And now I'll apply kajal as an eyeliner on my eyes. And now I'll be taking this shade to smudge the kajal to give that smoky effect. And now I'll do the same on my other eyes off camera. After that I'll curl my lashes using an eyelash curler. इसके बाद मैं वैसलीन लेके अपने आईलैश पे अप्लाई करूँगी एंड आफ्टर दैट आई अप्लाई मस्कारा ऑन दैट. सो मैंने अपने आईब्रोज पहले फिल नहीं किए थे, मैं भूल गई थी, सो अभी मैं उसको फिल कर लूँगी अच्छे से. एंड जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको मैं ब्रश आउट कर लूँगी. Now I'll outline my lips using a brown lip liner. उसके बाद मैं ये लाइटर शेड लेके अपने लिप्स पे फिल कर लूँगी. So now my makeup is done, and lastly I'll set my face using a setting spray and I'll dab of the excess using a beauty blender. So this is my final look. और मैंने अभी साड़ी पहन ली थी एंड मैंने बिंदी लगा लिया एंड इयररिंग्स भी पहन लिए और उसके बाद मैंने ये बैंगल्स पहने थे. और आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.